Hi, good morning to all of you. Today's topic is regression. In this regression topic, we will cover linear, multiple regression, then non-linear regression, and then coefficient of determination. But see, for today's session only, we are going to cover linear and multiple regression. So let's start with the session. So this is the case, regression. So under this regression part, let's see, first of all, the last session we have seen that correlation. So what is a relation, or what is the difference with respect to that correlation part? So what is correlation and what is regression? So if it is there is a regression and correlation, so how both the factors are involved? So let's see. So when I'm saying correlation, there were some problems related to correlation. So at a certain point of correlation equal to 1, that is correlation coefficient equal to 1 or minus 1, that is at the extreme values, we can predict the value of y from value of x with the 100% value accuracy, that is with the certainty, and all the values will be pointed on that particular straight line, or you can say that on the linear arrangement. Okay, so here my coefficient, that is correlation coefficient, is actually the predicted one, estimated one. Okay, so normal R is the true R of the whole population. Whole population means it is for all the cases. ठीक है, तो जैसे मुंबई शहर की बात करूँ तो मुंबई शहर में जितने लोग हैं वो एक्चुअल पॉपुलेशन, एंड व्हेन आई एम कंसीडरिंग अ सैंपल ऑफ 100 पर्सन्स, तो वो सैंपल हुआ. ठीक है, so R is very sensitive to extreme values, so with the change in the extreme values, R will change. So this was problem with the R. So now to simplify that one, okay, so with R, that is with the correlation, it was a problem that we cannot associate, that is association was possible, association was possible, but based on that relationship, okay, based on that relationship between x and y parameter, we were not able to predict one variable from the other. Like suppose अगर x की वैल्यू पता है तो मैं y की वैल्यू निकाल सकूं इस तरीके का. But regression provides you that ability. Regression technique provides you that ability. So the regression is one of the method where you can perform that one. So when I say that regression, so let's see the regression part. So regression, what this regression does, it helps us to forecast the value of dependent variable y from the value of independent variable. So y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग x की वैल्यू से. तो पहले समझते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या है. नेक्स्ट उसके बाद ये है, नेक्स्ट पॉइंट है रिग्रेशन यूज करने का, दैट इट हेल्प्स or it analyzes the specific relationship between both variable like independent and dependent variable. Okay, so that is the two main reasons why we are using this one. Okay, so this is the case. Let's see to solve or to understand first of all this regression part, there are various methods, like we can use the curve fitting. Under that curve fitting only we have the least square method, then we have the formula based systems. So the best way is to do the curve fitting, that is the least square method.
Okay, so we have the two ways to approach to the curve fitting. Okay, so we have studied that scattergram, and the strategy behind that is to draw a curve on that particular scattered values. तो जो भी ग्राफ था स्कैटरनेस का, वहां पे एक सिंगल कर्व बनाना है जिस तरीके से सारी के सारी वैल्यूज पूरे के पूरे ट्रेंड को डिफाइन करता रहे, एंड डेटा इज वेरी प्रिसाइज. सो we always try to point or to pass the curve through all the data. ये मेन अप्रोच है. सो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? वी कैन यूज दिस इन ट्रेंड एनालिसिस और hypothesis testing. Trend analysis means doing the prediction of value of dependent variable based on independent variable. तो कुछ predict करना है, like the suppose if I have to predict that what will be the future need of the food grains. Okay, like wheat. Take the example of wheat. So in the next 5 years, what would be the requirement for that total country? So if we need to calculate it, so we can predict based on this. So under that we can take the factor of like population, how much rise is there, और so उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, prediction कर सकते. That is the method of curve fitting. यहाँ पे prediction हो सकता है, trend analysis pattern. And there is hypothesis testing. So we create a mathematical model. Okay, we do the hypothesis, we assume something, and उसके बेसिस पे hypothesis testing करेंगे और उसके बेसिस पे हमारी values निकल. So this is the two applications which we can have. Let's see how the curves are there. तो देखो ये हमारे scattered values है. One way is to draw a line. Okay, and this line is not passing through all the values, but it is covering some points. जरूरी नहीं सारे points पे, but the main thing is कि जो total distance हो should be equidistant. It should be at the minimum distance from all of them. That is the total error should be minimum. Okay, the total error means ये difference जो है, देखते वो क्या है. This graph, it is passing through, so it is covering that particular aspect of passing through all the points, but again this is not a particular standard geometrical shape. It is a curve, but how to define this particular curve like in the standard form? So there are some standard ways, so we are going to follow that one. Okay, so best fit line, what is this best fit line? Curve fitting करना है तो बेस्ट फिटिंग का एग्जांपल हम लोग देखेंगे. तो इसके पहले आपको बताया कि हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल. So what is that independent variable? First of all, we'll see that. So you know that equation of a straight line, that is y equal to ax plus b. Y is equal to ax plus b, where a is a slope part, b is a intercept value. A is slope, b is intercept. So now here a and b are the arbitrary constants, x and y are the variables. So this variable x is called as independent variable, and this variable y is dependent variable. So based on this based on this x value, we can find out the value of y. That is, we can predict the value of y. So when I can do that, so this will be dependent and this is independent. Okay, so if equation is, suppose equation यही equation रहे x equal to ay plus b, then उस situation में क्या हो जाएगा, y becomes the independent and x becomes the that dependent one. तो उस केस में x equal to ay plus b में क्या हो जाएगा, y independent हो जाएगा और x dependent. ठीक है ना. यहाँ पे y cap क्या है? Y cap means we are going to find out the future value, predict कर रहे हैं. That will be called as a predicted value. And what is y? जो ग्राफ में दिया रहा है, टेबल में दिया रहा है, वो बोलते हैं ट्रू वैल्यू.
ऑब्जर्व्ड वैल्यू. सो लेट्स सी, यहाँ पे ग्रीन प्लॉटेड है कुछ, तो ग्रीन वैल्यूज है. व्हाट इज these green values? These are the actual values which you are getting from the observation table, या आपने ऑब्जर्व किया है. These are the observed values या actual values or true values. What are these values? These colored, these are the predicted values. Okay, so predicted किस तरीके से predict करेंगे? By this equation of line. What is this equation of line? This is the best fit line. Best fit line which describes all these points in a better way. So what is this? How to find out this best fit line? So ये line करेगा क्या? It minimizes the distance between data, this data, green one, and the fitted line. कैसे minimize करेगा? मतलब कि ये residual जो epsilon value है, so वो epsilon values को क्या करेगा? कम करना है, residual error को कम करना है. So it minimizes the residual errors. Let's see. So this is one representation. Okay, and here we are going to, like, 4 points are there: 1, 2, 3, 1 is 3, 1.5, 4, 3.2, and 2, 4. So how this plotting is done? हम लोग एक देखते हैं कि एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो चारों वैल्यूज के दो वैल्यूज के लेफ्ट साइड, दो वैल्यूज को राइट साइड में डिफरेंशिएट कर दे रही है. So now you find out the difference. How you are going to find out the difference? This is the predicted one, this is the actual value. तो उसकी actual की हम लोग ने prediction value यहाँ पे ले लिया. ये पहले के लिए हो गया. Then this is for second. So 2, 4 predicted was this one, but we are considering this one. Okay, so it becomes 2 minus 1, 4 minus 2. Then this is the next predicted value, but वो predicted ऊपर के side पे है. So this is the actual value, this is the predicted value. Next, same for this fourth point. Now the total value, this is the least square, that is sum of squared differences, comes to 6.89. Comes to 6.89. Now this value, suppose this is one of the way, तब तो यहाँ पे हमारा फिक्स हो जाएगा. बट सपोज वी मेक अनदर लाइन. ठीक है, तो सपोज वी पास दैट लाइन हॉरिजॉन्टली. इस तरीके से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर दिया. अब देखते हैं तो सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस आएगा, वो क्या आएगा? फ्रॉम ऑल दिस पॉइंट्स, so the sum of square differences is coming to 3.99. Now what? So which one is best one? जहाँ पे sum of square differences सबसे minimum आए. Okay, so that is the best line, or it is the best fit line. Okay, so smaller the sum of square differences, better the fit of the line to the data. So which one is the fittest one? 3.99, that is this yellow one, horizontal one. Okay, so we are going to, this was based on the data, we are going to see the next one. Now the actual least square regression, which was basically ये curve fitting जो था वही हमारा least square चीज था. Now least square method में important concept is residual, that difference between actual value and the predicted. So we have seen the model line, that is just equation of a straight line, that is the equation of the straight line. And in that equation of straight line we have seen that this y is equal to a plus bx. अब यहाँ पे a क्या हो गया? इंटरसेप्ट है. b क्या होगा? स्लोप. तो अगेन यहाँ पे x क्या है? इंडिपेंडेंट डेटा. y क्या है? डिपेंडेंट डेटा. एंड व्हाट इज रेसिडुअल? एप्सिलॉन वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू माइनस द प्रेडिक्टेड वैल्यू. बट सी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था? दैट वैल्यूज यहाँ पे हमें सम के फॉर्म में हमने देखी, सम के फॉर्म में सॉल्व करेंगे. सो समेशन ऑफ, वी नीड टू कैलकुलेट दिस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स. तो सम ऑफ समेशन ऑफ y माइनस वाई कैप द होल स्क्वायर. यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या है? वी नीड टू फाइंड आउट दिस a एंड b.
that is intercept and slope part, so that we can minimize this value. So when I'm getting this a and b, so a and b किस तरीके से होने चाहिए, so that मेरे के ये जो summation जो आने वाला है, sum of squares of residuals, that is minimum up to minimum 0 तक आएगा वो, या 0 तक लाना है, minimize कर. So how we are going to do this? So to minimize it, have certain methods. Let's see. तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि भाई what is the equation, what is the method of fitting a straight line. तो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस ई. ई क्या आ गया यहाँ पे, दैट ई इज नथिंग बट एरर और सम रेसिडुअल. कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया, वो चीज. ओके, बिटवीन द मॉडल एंड द ऑब्जर्वेशन व्हिच आई प्रिपेयर्ड. ओके, नेक्स्ट. so on which cases it can be applicable? So we have different type of functions, like it is a linear function, f of x is equal to a plus bx. I can say y equal to a plus bx. Then we have a quadratic equation, that is parabolic equation you can say, that is f of x equal to a plus bx plus cx square. Then polynomial equations are there. हम इसको बोल सकते हैं कि f of x या y equal to summation of a into b raised to x बोल सकते हैं, a into b raised to या x raised to b. So this is polynomial cases, ठीक है. And then general cases are some general cases are there. So in this session we are going to consider the linear one and the multiple regression. Okay, in the next part we will see quadratic and the polynomial one. How to decide whether I'm going for this method or that method. So the least square regression does the minimization work. So हम minimization करने वाले हैं. तो y कैप हमारे पास रहेगा, y I वैल्यू में हमारे पास रहेगा ट्रू वैल्यू, एंड दिस इज द वैल्यू विच वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट. किस बेसिस पे, हमारी x वैल्यू पे, इंडिपेंडेंट वैल्यू पे वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट इट. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, and remember that we need to minimize it. The second method is exact matching. So we are going to follow this least square regression for today's session. Let's see. Now suppose in the exam इस तरीके का कोई टेबल दिया हुआ है, एक्स आई वाई आई, दो एक्स एंड वाई की डेटा दी हुई है. तो एक्स की डेटाज में x1 से लेके xn तक वैल्यूज है, y की वैल्यूज में y1 से लेके yn तक. नाउ हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस. ठीक है, दैट इज सम ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, लाइक स्क्वायर डिफरेंसेस. तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ई आई स्क्वायर, दैट इज रेसिडुअल पार्ट. बेसिकली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वाई आई माइनस एफ एक्स आई द होल स्क्वायर. सो आप इसको किस तरीके से मिलेगा, एफ एक्स आई माइनस वाई आई, दैट इज नथिंग बट सिंस इट इज स्क्वायर every time it is going to provide you the absolute value, positive value. Okay, so the difference is going to be same, but ultimate goal which I have told you, how to determine a and b, how to determine that a and b. Okay, so to determine a and b, it is important that we create a function. What is this function? See, you need to understand this. आप एग्जाम में जरूरत नहीं कि इसको आप सॉल्व करो, आप समझ लो. तो यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास क्या बना कि हमने बोला कि हमारा फंक्शन क्या था, ये एक्चुअल फंक्शन है वाई आई. तो फंक्शन क्या हो गया, दिस इज, मैं अभी वाई आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई लिखूँ या एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई लिखूँ, बोथ आर सेम, करेक्ट. सो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स आई, एफ ऑफ एक्स आई क्या है, हमारे पास फंक्शन है ना a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स. so we are going to use this one, we are going to use this one. so a plus bx, a plus bx, since it is for the summation part, that is from I equal to 1 to n, यहाँ पे इस तरीके से माइनस वाई आई,
दिस इज द करंट वैल्यू और आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है एंड अ होल स्क्वायर. अब हमें इसको मिनिमम रखना है. वी नीड टू कीप इट मिनिमम. मिनिमम मीन्स इट कैन बी मिनिमम टिल द जीरो पार्ट. ठीक है. सिंस इट इज ओनली पॉजिटिव तो वो जीरो तक ही आ सकता है. हाउ टू डू दैट? हाउ टू मिनिमाइज इट? लेट्स सी. So to find out minimum part, okay, we need to take the partial differentiation. This is the necessary condition for keeping it minimum. Okay, so local minima, or you can say, so partial differentiation, if you have not studied it, leave it. Okay, you take it as a normal concept. Okay, partial differentiation क्या है basically? Normal differentiation है, but suppose there are two variables. हमें डिफरेंशिएट करना है एक वेरिएबल के विथ रिस्पेक्ट टू. सपोज यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे ए एंड बी, तो हमें डिफरेंशिएट करना है किसके थ्रू? विथ रिस्पेक्ट टू ए. सो कीप अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट. अब नॉर्मल जिस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उस तरीके से कर सकते हो. यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बी और ए के टर्म्स को कांस्टेंट रखो. जहां जहां ए टर्म है उतने टर्म को कांस्टेंट रखो. बाकी जहां पे अगर बी है तो उसको नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट करो. ठीक है. सो सपोज के एक्स होता था तो के एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट कम्स टू के. ओके, सो के इज ऑलवेज ट्रीटेड एज कांस्टेंट ना. सो हियर आल्सो इफ इट इज ए बी, तो ए बी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो गया? पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो बी आएगा क्योंकि ए तो डिफरेंशिएट हो जाएगा. सो आप समझो मत उसे. ठीक है, लीव इट. सो वी विल गेट टू नॉर्मल इक्वेशन. हमारा अल्टीमेट गोल है नॉर्मल इक्वेशंस को लेना. व्हाट आर द नॉर्मल इक्वेशंस? दीज आर द नॉर्मल इक्वेशन. एग्जाम में इतना ये सम सॉल्व करते हैं, इतनी चीजें नहीं चाहिए हमें. अब बेसिकली हम इक्वेशन देखेंगे, बट फिलहाल आप समझ लो किस तरीके से आया. ठीक है. सो इन दिस केस व्हेन यू डिफरेंशिएट, when you partially differentiate this equation, so you get this solution. Partial differentiation with respect to a, you get this equation, and partial differentiation with respect to b, you get this one. Now you open the bracket and solve it. So when you open the bracket and take the y terms on one side and the remaining x terms on the other side, so it becomes a normal equation. Now this normal equation is going to help us to find out a and b. So normal equation use करके हम क्या करने वाले? a and b हम लोग find out करने वाले. That was our ultimate goal. ठीक है. Let's see. Now by getting these two equations we can solve them simultaneously and we can get both the values of a and b. Okay, this is that same case. Let's see one question. Here the question is, fit the straight line for the following data by using least square method. Okay, by using least square method. Data is very small, like x and y is given, and यहाँ पे three set of the data are given. तो 1 2 3 है और उसके साथ में उसकी रिस्पेक्टिव y डेटा है. ठीक है. सो सम हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? यू अज्यूम दैट. ओके, तो स्टैंडर्ड लाइन जो भी आप यहाँ पे कंसिडर करोगे वो आप कंसिडर कर लो. तो आई एम गोइंग टू कंसिडर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. आप ax प्लस बी भी कंसिडर कर सकते हो. ठीक है. सो कुछ भी लाइन आपको कंसिडर करना है, mx प्लस सी, दैट इज ऑल्सो ओके. दैट इज अप टू यू. The standard is f of x equal to a plus bx. I have considered it. Okay. Now you remember that normal equation which we have got in this method. अब उसको हम लोग लिखने वाले हैं. अब इसको याद कैसे रखना है? ठीक है. अब आपको लगेगा यार इतना समीशन के टर्म्स हम लोग याद रखने वाले, बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं. तो लेट्स सी दैट वन ऑल्सो. ओके, सो हाउ टू रिमेंबर दैट वन?
So let's see. So if it is the case of, if it is the case of, like we say, two variables, like only y equal to ax plus b or a plus bx. So it is y equal to my equation 1. My equation 1. Okay. Now I am going to use this equation. और इक्वेशन याद कैसे रखना है आपको? आपको पहली बार में लगा दो पूरे के पूरे टर्म्स. व्हाट इज ए? कांस्टेंट है, बराबर है. कांस्टेंट का समेशन करोगे, कांस्टेंट n टाइम्स ऐड करोगे, क्या होगा? अगर 5 को ही n टाइम्स ऐड करो, तो 5 टाइम्स ऑफ n इज, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, a को हम लोग कितने ऐड कर रहे हैं? n टाइम, कम्स a n प्लस b इज कांस्टेंट, बाहर रखना है. देन समेशन ऑफ becomes equation of नॉर्मल इक्वेशन. नॉर्मल इक्वेशन बनाने का तरीका, दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? समेशन ऑफ, अभी यहाँ पे एक और टर्म है, केवल कितने हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नया इक्वेशन मिल गया हमें. सेकेंड इक्वेशन, कितने इक्वेशन, कितने कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर? दो कोएफिशिएंट टर्म्स फाइंड आउट कर. क्या करेंगे फाइंड आउट करने? फाइंड आउट दैट टू टर्म्स, two variables are there, we need two equations. So what we need to get another equation. नॉर्मल इक्वेशन कैसे क्रिएट करने के? सिर्फ अज्यूम करो यहाँ पे मैंने टर्म्स को सारे के सारे जो वन को है मल्टीप्लाई कर दी. अज्यूम करो यहाँ भी इसको है. अब समेशन की बारी है, करना है हमको. सिंस ए कांस्टेंट है, मैंने उसको बाहर रखा है उसको ब्रैकेट से. यहाँ बी कांस्टेंट है. बात क्लियर है? तरीके से दोनों इक्वेशन आप सिंपल तरीके काम में, तो आपको ज़्यादा प्रेशर लेने, बट गॉट द आइडिया हाउ वी आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन, हाउ वी आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर, हाउ डिटरमाइन कैसे करना पार्शियल डिफरेंस नॉर्मल इक्वेशन. ठीक है. तो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट समेशन के साथ में वन एंड हर बार वो लिखा. तो नाउ आई एम हैविंग दैट इक्वेशन, normal equation, got normal. What I need to prepare that summed value. जहाँ जहाँ समीशन के टर्म्स है, सारे के सारे समीशन टर्म्स को फाइंड आउट करना है. We need to prepare the table
कैन सी कि हमें टेबल में कौन कौन से टर्म्स की जरूरत पड़ेगी. हमें जरूरत पड़ेगा समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड समेशन ऑफ एक्स वाई. तो कैन prepare the table according to that. Let's prepare the table. Twins part. This is x, y, x square, y. That is not y square. You already seen how to prepare that table in the last session as well as in the last sessions also. So after getting this summation value, that is summation of x is equal to 6, summation of y is equal to 17.3. Likewise, you put this values of summation in this equation. In this equation. What is n? n is number of x terms और number of y terms. कोई भी एक टर्म ले लो. तो कितने 3. So put 3 over there. You got two equations. Solve them simultaneously. Simultaneously we get. Solving the equation simultaneously we get. Solve them simultaneously. You will get value. So what is this a and b? It was the required value which we need to calculate. So when you put this value, so when you put this value in this equation, that is a and b की जगह पे रखोगे. a की जगह पे आप वैल्यूज रख दो उसकी 4.566 एंड b इक्वल टू 0.6. तो इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 4.556 प्लस 0.6x. दैट इज माय straight line equation of that regression. So that is equation of regression line. We call it as the equation of regression line. Question might be asked as a find the regression line for the following data or fit the straight line curve. To fit the straight line curve means ये चीज किया. Find the regression line by using the least square method. Then also to apply this method. Next is how to deal with the multiple linear regression. What is the meaning of multiple linear regression? So it is the case where multiple variables are involved. Multiple variables are involved. So suppose my equation is in this form. So suppose आप इसको बोलो कि y equal to a plus bx plus ct. पहले तक क्या था? y equal to a plus bx. एक ही इंडिपेंडेंट पैरामीटर था और एक डिपेंडेंट पैरामीटर. अब यहाँ पे क्या हो गया? दो इंडिपेंडेंट टर्म्स हो गए. कितने? दो इंडिपेंडेंट टर्म्स हो गए और एक एक क्या हो गया आपका? डिपेंडेंट. ठीक है. अब हमें हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया कि दैट वी नीड टू फाइंड आउट थ्री वेरिएबल्स ए बी सी. तीन वेरिएबल्स हमें फाइंड आउट करने हैं. वेरिएबल्स क्या है? ठीक है जी. कैसे फाइंड आउट करेंगे हम तीन वेरिएबल्स? इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. तो अगेन यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा? तीन इक्वेशंस प्रिपेयर करने हैं. इक्वेशन थ्री इक्वेशन. तो नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस? सेम वे तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन करके इक्वेशन लाया हुआ था. सेम तरीके से. okay? तो आप उसके इक्वेशंस ला सकते हो. पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन प्लस बी एक्स. नाउ फॉर दिस आपको सिर्फ क्या करना है? माइनस वाई आई करके इसका स्क्वायर करके इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए विद. ये कंडीशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे फिलहाल. तो सिर्फ समझना ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ये इक्वेशंस भी इंपॉर्टेंट नहीं है. फाइनली दिस इज नॉर्मल इक्वेशन. ये इक्वेशंस आपको ये पार्ट आपके लिए फिलहाल ऑप्शन. आपको सम में एग्जाम में नहीं लिखा है. एग्जाम में सिर्फ किस तरीके से रहेगा? आपको इक्वेशन दैट इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन वॉल्यूम किया या इक्वेशन ऑफ मल्टीपल. देन नॉर्मल इक्वेशन यू राइट डाउन. Prepare the table, write down the equation on this values,
तो ये वैल्यूज जो है आपकी समीशन की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ पे, नॉर्मल इक्वेशन, एंड देन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली। और फिर एंड में आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन आपको रिग्रेशन का लाइन का इक्वेशन वो आप, तो दैट इज वन केस। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, so these are my normal equation. How to find out that, how to find out or how to write them directly, let's see. तो अब बात आती है कि यहाँ पे हमारे पास a के साथ में y इक्वल टू a प्लस x, देन क्वेश्चन क्या है, प्लस bx प्लस y इक्वेशन. So since I need to find out three variables a, b, इतना तो मुझे क्लियर है दैट आई नीड टू प्रिपेयर थ्री इक्वेशंस. कैसे लिखेंगे डायरेक्टली, आप पहले तो एज इट इज लिख लो इक्वेशन और उस पे समेशन, summation of y is, since a is constant, a बाहर आ गया, समेशन a इंटू समेशन ऑफ वन, समेशन ऑफ वन कितनी बार, n टाइम्स, तो कितना हो गया ये a n, कांस्टेंट n ले रहा हूँ इसकी, फिर b कांस्टेंट है, समेशन किस हो जाएगा, x वेरिएबल है क्या, प्लस c टू समेशन ऑफ t इज ऑल्सो वेरिएबल बाय इक्वेशन नंबर, ये पहला नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है, पहला नॉर्मल इक्वेशन. ओके, अब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं. तो अब क्या, अब आएगा नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट इक्वेशन. नॉर्मल इक्वेशन में से हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, सेकंड इक्वेशन कैसे निकाले, तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, ये देखो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहला ये है, दूसरा वेरिएबल, तो पहले तो आप x से मल्टीप्लाई कर लो तो इक्वेशन, एक के साथ x गया तो एज इट इज जैसे हमने पिछले में किया था वैसे, प्लस b इंटू, यहाँ पे x के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के साथ में x मल्टीप्लाई करना है, हो गया x, आप समेशन लगा दो आप, सिर्फ याद करने का तरीका है. अब ये हो गया हमारा सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन. व्हाट इज माय नेक्स्ट इक्वेशन, अब x हो चुका, अब किसकी बारी है, बारी है t. अब ये टर्म हमको सिलेक्ट करना, देखते हैं, से मल्टीप्लाई करो y को,
पूरे इक्वेशन बाय टी, समेशन डायरेक्टली लगाते जाते इक्वल टू ए के साथ में किसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन ओरिजिनल इक्वेशन में प्लस इंटू समेशन ऑफ एक्स के साथ में टी मल्टीप्लाई, यहाँ पे के साथ में टी ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, these are my four normal equations. Now what is important now, important is आप टेबल जो प्रिपेयर करेंगे, टेबल में कौन कौन सी वैल्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे कौन सी वैल्यूज के लिए। तो एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो, जो भी समीशन टर्म्स दिखे के लिए हमको प्रिपेयर करना ही है, लाइक समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जो नए हैं वो दिख रहा हो, ऑफ एक्स टी, समेशन ऑफ वाई टी, यहाँ पे समेशन ऑफ टी ऑलरेडी हो चुका, समेशन ऑफ, so I need to prepare 1 4 5 6 7 8 8 columns. Let's see, these are the equation, normal equation directly लिखने, तो आपको मैंने, तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लिखते हो, that's also okay, that is the actual method, ये सिर्फ आपको लिखने का तरीका मैंने बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो for that data, for that data here we are going to prepare that observation table. So first of all we have prepared the normal equations, okay, these are my normal equations. Now after this normal equations, prepare the observation table, the observation table for t, that is summation of t for x, so we are going to summation x, summation of y मिलेगा यहाँ से, summation of x square, summation of xt, summation of xy, summation of t square, and summation of ty या yt. Now put all these summation values as well as n value in the normal equations, all these normal equations. What you are going to get? Three equations. So that equation, three equations are going to provide you A, B. Solve the equations simultaneously. You will get the value of A, B. Now put these values of A, B, C, the standard equation which is already given, multiple linear regression. For that, put that values, you get the equation of regression line for this multi-linear regression. Okay, so this was multiple linear regression. So this regression line, or what is this regression line? It is the line of the best fit. It is the line of the best fit. Now, so by this we are getting the sum of squares of the residuals, which should be minimum. डायरेक्टली फॉर्मूले से करना है अगर सम्स को, तो ऑन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स में आपको बता चुका हूँ, y इक्वल टू mx प्लस बी या y इक्वल टू mx प्लस सी, किस तरीके से भी टर्म्स लो, दिस वुड बी माय फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज किस तरीके से आए, whatever my normal equation was there, it is by solving them, हमने स्लोप फाइंड आउट किया। स्लोप मतलब कि वहां पे बी टर्म,
जो हमने y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स देखे वो अभी तक b टर्म्स के. फाइंड आउट दिस, यूज दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला. So first of all, prepare the table and put this values. और ये क्या है, नॉर्मल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करके. ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड नहीं है. So sub the question comes to find the equation of regression line and x and y data was given. Once you have to prepare the table. After preparing the table, write down the formula of slope, put the value of summations and n value and calculate the m value. Then use this m value in the equation. Okay, so equation में put करो. तो b वैल्यू फाइंड आउट करनी है बराबर. क्या तरीके से आपको याद है, a प्लस बी एक्स, a and b was our motto was to calculate a and b. So over here also need to calculate b. y equal to mx plus b के इक्वेशन b कैलकुलेट करना है, इंटरसेप्ट वैल्यू. तो b इक्वल टू y बार माइनस mx बार. y बार mx बार क्या है, दैट इज प्रेडिक्ट दैट फ्यूचर वैल्यूज, सॉरी नॉट फ्यूचर वैल्यूज, इट इज दी मीन वैल्यूज. हमारे पास मीन वैल्यूज कहाँ से, वी हैव समेशन ऑफ x by the mean topic. You have already studied that summation of x divided by n. n कितना है 5. So we can calculate this y bar as well as we can calculate x. Summation of x divided by x, sorry, summation of x divided by n, that would be x bar. Summation of y divided by n, that would be y bar. And you already got m value, so put that value. Would get value of b. Put this value of b and m, the original equation. Original equation means y equal to mx plus b, and you would get your equation of regression line. So by this equation of regression line, you can see that, you can plot it. यहाँ पे देखो आपके जो ब्लू डॉट्स है वो है एक्चुअल वैल्यूज, वो है ये एक्चुअल वैल्यूज एक्स एंड वाई की. एंड व्हाट इज दिस रेड लाइन, this is the line of regression, line of regression. Okay, so this is the equation of regression line, and over here this is my point, my x bar y bar point, mean value, mean point. ठीक है, similarly we can expand this concept to the other sums. यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन. दिस ऑलमोस्ट सेम डेटा वी हैव सॉल्व्ड विथ कोरिलेशन. ओके, so here we need to calculate the, that is we need to find out the equation of regression line and then predict some value. Prediction किस पे करना है, expected test score where number of hours of TV watching is given. So कौन सा डेटा दिया हुआ है, x डेटा. So x data is given, it is asking that y data. If some data is given, तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा इक्वेशन प्रिपेयर करना है, x इंडिपेंडेंट होना चाहिए या डिपेंडेंट. सो हियर x data is given, so I am going to use equation where x is independent. जब जो हम लोग इक्वेशन अभी तक यूज कर रहे थे वो, that is y equal to a plus bx और mx plus b, जो भी आप इक्वेशन. ठीक है, तो prepare the table, find out the summation, put in the formula, you will get the value. और what is the next method, अगर लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करना है क्या कर सकते हो, आपके पास नॉर्मल इक्वेशंस है. इन दैट नॉर्मल इक्वेशंस सिंस देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, और आप क्या करो, यू अज्यूम दैट इट इज फॉर स्ट्रेट लाइन. दिस इज अ लीनियर रिप्रेजेंटेशन ना,
So for this one, you can utilize that straight line equation. So use that straight line equation, okay, and take the normal equation of straight line and put that values of summation in that straight line. You can get the answer. You will see that both the answers would be same. आप इस मेथड से आया हुआ आंसर एंड उस मेथड से, you will be getting the same answer. Then you can plot it. What is the conclusion? With the increase in the hours of watching TV, test score is decreasing. This was related to correlation. Now what? Now we can do the prediction by using the regression line. We can do the prediction by using the regression line. So how we can predict it? We got the regression line, correct? So now x value is given to you. X value is given to you. So put this value of x in this equation and you can predict the value of y. So put this value, put the value of 9 hours and you are getting y equal to 57.34. So the answer is that if some student is watching 9 hours of TV over the weekend, then the student is going to get 57.34. This is prediction. This is predicted value. The actual value might be different, but that would be nearby. Okay. एंड आपने अभी वही देखा, अभी पढ़ा कि जो एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होगा वो हमारा रेसिडुअल एरर होगा. एंड बेस्ड ऑन दैट रेसिडुअल एरर ओनली वी हैव calculated all this least square method and all that. Okay. So this was idea related to regression line and normal formula method. Now, what about the variations in the regression line? अभी तक हमने किस तरीके के वेरिएबल्स देखे? हम लोग deviation या variations देख रहे थे. So we need to calculate three type of variation: total deviation, explained deviation, and unexplained. What is total deviation? This is yi minus y bar. What is yi? It is the observed value. What is y bar? Mean value. So observed value minus mean value is equal to total deviation, actual deviation. What is explained deviation? It is future value, that is predicted value, minus mean value. वो है explained deviation. And what is unexplained deviation? That is the observed value minus predicted value. Observed value minus predicted value. That is my unexpected. तो हमारा important concept यहाँ से क्या lead करना है? We need to find out determination factor. Okay. तो हम total variation इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. Explained variation, this is the formula for explained variation, and this is formula for the unexplained variation. हमने देखा ये factors, total deviation क्या है? yi minus y bar, but total when you are going to calculate, ये एक इंडिविजुअल के लिए है, तो ऐसे सभी के सभी इन्वॉल्व होंगे. So that would be involved with the summation. Okay. Now, what is total variation? When you add explained variation with the unexplained variation, you get the total variation. What is main factor is coefficient of determination. How you are going to find out the coefficient of determination? What is that? That is r square. And what is r square? R square is the ratio of explained variation to the total variation. That's why we need to study that explained variation to the total variation. क्या है basically ये? That is the ratio of explained variation to the total variation. तो हमने previous cases में देखे explained variation, total variation. अब उसके आप क्या कर सकते हैं? Based on that, आप determination. Suppose the previous case only, that previous example only, the number of hours the students have watched television and the test score
of the each student was r equal to minus 0.83. This was a correlation, huh? And which we, this particular value we have got in the last to last, that when we have seen that correlation session. So what to do? So coefficient of determination is nothing but square of this value. When you take the square, the value comes to 0.691. What it means that about 69.1% of the variation in the test scores can be explained by variation in the hours of TV watch. So TV hours में जितने variations, based on that, exam score, that is the test score variation, can be explained up to 69%. And remaining 31% or 30.9% of variation is unexplained. That is unexpected. So this was all about the part 1, where we have studied linear regression, multiple linear, how to prepare the normal equations, that is how to find out a and b, and how to solve the sums based on the linear and multiple linear regression. The last topic which we have seen was coefficient of determination. Thank you.